Hello everyone, welcome to Sword of the classes. This is the question number 48 from GATE 2026 Mathematical Science. This is the question from partial differential equation. यहाँ पर एक तो OF equation दिया गया है, उसका देखिए लेंथ कहाँ पर लाई कर रहा है इनफाइनाइट लेंथ. तो हम लोग डी एलम्बर्ट्स का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डी एलम्बर्ट्स? So the solution of this OF equation is uxt equals to 1 by 2 f of x plus of ct plus f of x minus ct plus integration some range x minus ct to x plus of ct. बाहर में एक तो 1/2 सी है, g जाई डी जाई. So what is g जाई? g जाई is a ut x0 इसका जो फंक्शन होता है उसको हम लोग gx बोलते हैं. बट यहाँ पर देखिए ut x0 का फंक्शन क्या है? 0. So therefore gx here is 0. So the function become uxt. तो ये बहुत इजी हो गया, इंटीग्रेशन पार्ट हट गया. f of x plus of ct plus of f of x minus ct. This is the actual answer of this wave equation according to the D'Alembert's formula. नाउ हम लोग को बोला गया है कि u0t का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. सो पहले हम लोग u02 निकाले. 1/2 f of ct plus f of minus ct. Okay. So and what is fx? Fx is the function with the initial condition ux0 equals to fx. बट यहाँ पर fx क्या दिया गया है? ux0 का कंडीशन क्या है? दिस. सो fx where fx is nothing but 1 for mod of x less than equals to 1, less than 1 and 0 otherwise. ओके. सो अब देखिए एफ सी टी इसका वैल्यू कब हो 1 होगा? जो व्हेन mod of ct less than 1. That means -1 less than ct less than 1. So this implies -1 by c less than t less than 1 by c. Okay, because c is greater than 0 which is given. Okay, so c is greater than 0 is given. So हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं. Okay, so fct 1 होगा जब so fct equals to 1, therefore fct equals to 1 when -1 by c less than t less than 1 by c. Okay, अब देखिए -1 by c less than t less than 1 by c होना, इसको हम लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 by c ग्रेटर देन -t ग्रेटर देन 1 ना, greater than -1 by c. So which implies -1 by c less than -t less than 1 by c. अब इसको अगर हम लोग c से मल्टीप्लाई करें so -1 less than -ct less than 1. So this implies mod of -ct, this implies mod of -ct also less than 1. So इसके वजह से हम लोग f of -ct को भी 1 बोल सकते हैं. So we see that ux0 equals to 1/2 f of ct plus f of minus ct. ये मैक्सिमम वैल्यू कब 1 कब लेगा? व्हेन फॉर अ सिंगल रेंज इन सी, सिंगल रेंज फॉर टी, एंड उस रेंज के बाहर एक 0 होगा और 2 0 होगा, फिर एक इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा. तो मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों ही एक होगा, एंड दोनों एक होगा ओनली व्हेन -c लेस देन t लेस देन 1 by c. इस कॉम्बिनेशन, इस रेंज की वजह से दोनों का वैल्यू ही हम लोग 1 मिल गया. हम लोग यहाँ पर देखें. So that's why the maximum value is 1/2 into 2. This is 1. So the maximum value, so therefore maximum ux0 will be 1 on -1 by c
लेस देन टी लेस देन 1 by c. सो दिस इज द आंसर. देखिए यहाँ पर एफ सी टी जो 1 हो रहा है -1/c लेस देन टी लेस देन 1/c की वजह से, इस इंटरवल को हम लोग मैनिपुलेट करते लास्ट में ये कंडीशन लेके आए. इस कंडीशन की वजह से एफ ऑफ माइनस सी टी भी 1 होगा. सो फॉर दिस सिंगल रेंज ऑफ टी एफ सी टी भी 1 हो रहा है, एफ माइनस सी टी भी 1 हो रहा है. सो फॉर दिस सिंगल range of t, the value of the both function are 1 and these are the maximum value of that function. So the maximum value of u is 0 is 1. अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द रेंज वेयर द मैक्सिमम वैल्यू विल लाई, सो दिस इज द रेंज. तो हम लोग दोनों ही आंसर हम लोग को मिल गया, बट यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू ही मांगा है. हाँ, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ए इज ट्रू. ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोई इक्वेशन. थैंक यू.